Morning everyone, welcome to Global Online University, and here I am your educator, that is Dr. Trupti. We are going to have a complete crash course for Unit 2, that is Research Aptitude for UGC NTA Net Paper 1. So आप सबका स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में। मैं आपके एजुकेटर डॉक्टर तृप्ति। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट क्रैश कोर्स दैट इज फॉर यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपके यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद एक समरी लेते हैं कि एग्जैक्टली हम स्टार्ट कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च से। रिसर्च होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू स्टडी, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक विल बी अवर मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग, हम थोड़े रिसर्च के मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होगा स्टेप्स इन रिसर्च, यानी अगर आप जब रिसर्च प्रोसेस करते हो तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस के लिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीक्वेंस अंडरस्टैंड कर लो, कंसेप्ट्स क्लियर कर लो सीक्वेंस के। फिर फोर्थ टॉपिक होगा थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो उसमें हम काफी सारे चीजें स्टाइल रेफरेंसिंग के ऊपर देखने वाले हैं। So this is important. Then next is application of ITC in research, and ITC, that is information technology. That is how you have information communication and technology. How you make use of this in ITC. Sorry, use of this in research. And the last one we are going to study is research ethics. यानी जब आप research follow करते हो, कुछ basic do's and don'ts है, code ethics, that is do's and don'ts. तो क्या है रिसर्च के डूज एंड डोंट्स, या क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है, वो इस हम टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च। रिसर्च होता क्या है? सो एक एन एक्टिविटी है, रिसर्च यानी एक एक्टिविटी है जो हमें बहुत ही केयरफुली, सिस्टमैटिकली, लॉजिकली, दैट इज विथ रैशनल थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, इन डिटेल। ओके, यहाँ पे हम शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। और जी ये एक्टिविटी वी डू इट टू इन्वेस्टिगेट एंड टू एक्सपेरिमेंट, यानी हम कुछ एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। और एम इसका एक ही होता है, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिसर्च करना पड़ता है। So instead of using this word careful, systematically, logical है या detail है या empirical है या rational है, हम उसके लिए सिर्फ एक word use करते हैं जो कि हम बोलते हैं कि हम research कर रहे हैं। Okay, so इसका मतलब है हम research क्यों कर रहे हैं? We have to find out something, यानी हमें उस problem का solution find out करने के लिए उस problem पे हमें research करनी पड़ती है, and that is called as what? Research. ये सारे रिसर्च के आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, आप इसके रिसर्च डिफाइंड होता है इन्हीं वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रिसर्च। अभी रिसर्च क्यों करना है? ऑब्वियसली रिसर्च से हमें न्यू आइडियाज मिलते हैं, न्यू इंसाइट्स मिलते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट जिसके अजम्पशन से हम अपनी आई मीन टू से रिसर्च प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। बट हमें 100% प्रूफ चाहिए होता है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम एग्जैक्टली कौन से वे से अफेक्टेड है, या कौन से ऐसे वेरिएबल्स है, फैक्टर्स है जिससे ये रिसर्च अफेक्टेड है। सो उसके लिए हम करते हैं स्टार्ट एक अजम्पशन से, जो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन आपकी रिसर्च जब तक आई मीन टू से आपकी रिसर्च तब तक नहीं प्रूफ होती है जब तक आप आपके हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं करते हो। So hypothesis is nothing but a tentative statement which you have to do or which you have to prove in order to conclude your research. तो उसके लिए करना क्या पड़ता है? हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स
को जो इंडिविजुअल के होते हैं या ग्रुप के होते हैं, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। वी हैव टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कैसे कौन से इंटरवल्स में वो अकर करते हैं या वो एसोसिएटेड है किसी अकरेंस से। एक्सपेरिमेंटली एंड साइंटिफिकली हमें उसे टेस्ट करना पड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप फाइंड आउट करने पड़ते हैं, and then only we can tell that the purpose of research is to find something which is which gives a new insight, which helps to investigate, which helps to determine, and which helps to conduct an experiment with a scientific test. अगर आप इस इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकोगे कि आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, यानी आप किस पर्पस के लिए आपकी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू आंसर द पर्पस ऑफ रिसर्च. देन यस, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स ये यूनिवर्सल आप बुला सकते हो. बेसिकली इन्हें इनका इनका एम क्या होता है, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को रिव्यू करना और कुछ नई चीज सीखना, या तो कुछ एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, या तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना, इन्वेस्टिगेट करना, अंडरस्टैंड करके फिनोमेना, एक न्यू फिनोमेना डेवलप करना, या तो प्रोड्यूस जनरेट अ न्यू नॉलेज. सो ये बेसिकली क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है. ओके, नाउ दिस इज, ये तो हो गए जनरल और जनरल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, नाउ वी विल लेट अस सी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. अभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने आई मीन जैसे इन थ्योरी वाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से वी हैव टू स्टडी कि उन्होंने एक आइडिया दिया है. जैसे हम पहले तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम का नॉलेज होता है, हम उसे लिस्ट डाउन करते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे हम उसे स्टडी करते हैं, हम कैसे उसे डिटरमाइन करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं. फिर when we start with analysis, we start comparing, we start contrasting, we start categorizing, we start classifying. हम उसके मॉडल्स डेवलप करते हैं, फिर उसे सिंथेसाइज करते हैं. जैसे जैसे लाइक इट मींस पहले हम उसे ब्रेक करते हैं, फिर उसको कंबाइन करके उसे पढ़ते हैं, हम इसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन, हमें उसे एक्सप्लेन करते हैं या पैराफ्रेज करते हैं, एंड देन वी कम टू इवैल्यूएशन, दैट इज अ फॉर्म ऑफ जजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, गिविंग अ क्रिटिक, गिविंग अ जस्टिफिकेशन, या उसे वेरीफाई करते हैं, एसेस करते हैं और उसे रिकमेंड करते हैं. और इसी बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. नाउ डिफरेंस क्या होता है जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अ पर्टिकुलर स्कोप देते हैं रिसर्च को. जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स आप उसमें कुछ स्पेशल या यूनिक नहीं फाइंड आउट करते हो. वैसे ही अगर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट किया है या अगर आप करते हो, सो यू कैन फाइंड आउट समथिंग स्पेसिफिक, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट योर रिसर्च प्रॉब्लम. देन गोइंग टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये टॉपिक आपको आ सकता है, यू विल बी गेटिंग सर्टेन पॉइंट्स और उसमें से आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना है जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. जैसे रिसर्च को प्लान किया जाता है, सिस्टमैटिकली अप्रोच होता है. सी ये सारी चीजें इट्स वेरी फैक्चुअल, यानी आपको कुछ प्रूव करना है, तो आप बेसिकली यू डोंट गो इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे. आप ऐसे ही रैंडमली कुछ ठीक है, आपने अगर रैंडमली आपने सोचा भी कि आपको रिसर्च करनी है, थॉट आया जो रैंडम था, ओके, बट उसके बाद आपको जो भी स्टेप्स या प्रोसेस करनी है वो तो प्लान्ड ही करने पड़ेंगे. रैंडमली आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो या रिसर्च डिसाइड कर सकते हो, पर रैंडमली रिसर्च को अनप्लान्ड वे में कंडक्ट नहीं कर सकते हो. लॉजिकल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. Obviously it has to be sensible, it has to be systematic, it has to be rational. हम यहाँ पे illogical चीजें नहीं कंसिडर करते हैं. रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए और वैलिड भी होनी चाहिए. एट द सेम टाइम इस रिसर्च को हम लाइव डेटा से पढ़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम करंट empirical data, that is real time data.
जो एक्यूरेट होने चाहिए रिजल्ट्स में, प्रोसीजर्स में, मेजरमेंट्स में, और उसकी जो भी इन डेप्थ एनालिसिस है होनी चाहिए, एंड इट हैव टू एलिमिनेट एरर्स। तो आप देख रहे हो दैट यू आर सीइंग दैट वेरी माइन्यूट थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ मेनी अ टाइम्स आप सोच रहे होगे कि रिसर्च ऐसे अगर नहीं होता है, बट स्टिल भी रिसर्च का देयर इज अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन आता है। सो इन दैट केस आपका रिसर्च या तो वैलिड नहीं होगा या रिलायबल नहीं होगा। आगे चल के कोई इस रिसर्च को रिकंडक्ट करता है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर रिसर्च। सो आपको ऐसे सारी चीजें को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वो रिसर्च एथिक्स के पार्ट है। आप कुछ चीजों को यू कांट जस्ट मेक अवे गो। आपको उसमें देखना है कि सारी चीजें इंक्लूडेड इन ए सिस्टमैटिक वे, जो एक रिसर्चर को करनी चाहिए। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम, दैट इज स्टार्टिंग विद पॉजिटिविज्म, जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म, जो बेस्ड होता है नॉलेज जनरेटेड थ्रू साइंटिफिक मेथड, यानी इट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू पॉजिटिविज्म। हम पॉजिटिव में ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। Post positivism is social and education combination of positivism and constructivism। यानी अगर पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के अप्रोच को या पैराडाइम को अगर उसे साथ में लाते हैं, तो इट्स कॉल्ड एज पोस्ट पॉजिटिविज्म। फिर अगला pragmatic attitude है, that is directed action as a starting point of research। बहुत ही practical way में होते हैं चीजें या इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम, दैट इज फोकस्ड ऑन मार्जिनलाइज कमिटीज, जो कमिटीज पे जा काफी सारा फोकस डालते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अ सीनियर सिटीजन, ओके, फॉर एग्जांपल अ ट्राइबल कम्युनिटी। Then critical theory, that is challenges the dominant way of exploring and explaining। आप एक प्री डिफाइंड वे होता है चीजें एक्सप्लेन या एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट इज यस, टाइप्स ऑफ रिसर्च हमें पढ़नी है। बेसिकली आपको शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको अगर आप रिसर्चर हो, आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्चर, सो आपको ये बेसिक क्वेश्चन किया जाता है कि आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जहाँ पे आप एक ऑब्जेक्टिव इस द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द फिनोमेना, whereas quantitative में hypothesis को confirm, it is to confirm the hypothesis। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि क्वालिटेटिव फ्लेक्सिबल होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज लाइक विच इज रिजिड। क्वालिटेटिव में आप इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को टारगेट कर सकते हो, whereas in quantitative you go with questionnaire, survey, structured observations। Analytical objectives अगर क्वालिटेटिव की आपकी को पढ़नी है, so it's basically about variation, relationship, individual experience, group norms। वहीं पे क्वांटिटेटिव में आप पढ़ोगे कि इट इज it's about casual relationships and characteristics of a particular population। क्वालिटेटिव में हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं, जहाँ पे लिबर्टी दी जा सकती है टू पुट योर थॉट्स पर्सपेक्टिव्स। वेरएज ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव में हम ये देखेंगे कि क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है आपको आंसर्स करने के लिए। वेरएज नेचर ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव में आपको पता चलेगा कि वो ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स और फिल्म नोट्स के बेस पे होता है। Quantitative में it's assigned based on the numerical values। Some aspects, that is नेचर ऑफ स्टडी डिजाइन, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो लैंग्वेज इंटरव्यूज के बेसिस पे होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पॉन्सेस या तो फिर डेटा कलेक्शन। यहाँ पे वो स्टेबल होता है थ्रू आउट, इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। वो बेस्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम अगर आप बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की बात करते हो, तो बेसिक रिसर्च
साइंटिफिक नॉलेज से बेस्ड होता है, अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे डिपेंड होता है. सो एज हमने बोला कि बेसिक रिसर्च इट इज साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, इट्स मोर ऑफ थियोरेटिकल, whereas applied research is more practical. Basic research is universal in nature. Practical research यहाँ पे limited हो जाता, applied research यहाँ पे limited हो जाता है. Examples है basic research के study of human behavior, whereas in applied research it is about study of the socio-economic or political trend. At the same time आपके आप next approaches पढ़ेंगे, that is deductive and inductive approach, very very important. Deductive approach is a type of quantitative approach, whereas inductive comes under qualitative. Okay, हम इसको डिटेल में with the help of diagram पढ़ेंगे. डिडक्टिव अप्रोच जैसे आप देख रहे हो, इट्स अ टॉप टू बॉटम. ओके, जैसे टॉप टू बॉटम. वेराज अगर आप इंडक्टिव को देखोगे तो इट इज बॉटम टू टॉप. ओके, जैसे यहाँ पे डिडक्टिव में थ्योरी से स्टार्ट होता है और या तो कंफर्मेशन या रिजेक्शन पे एंड होता है. वेराज इंडक्टिव में इट स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स विद अ थ्योरी डेवलपमेंट. सो हम अगर हम इंडक्टिव यूज करते हैं, वी कॉल इट एज स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल, दैट इज इंडक्टिव. ओके, स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके हम जनरल रूल की तरफ एंड होते हैं. वेरएज अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव की, सी डिडक्ट, आप उसको डिडक्ट कर रहे हो. सो जनरल से लेके स्पेसिफिक, जस्ट डोंट बाय हार्ट. आप इसको भूल जाओगे अगर बाय हार्ट करने बैठ जाओगे. सी द नंबर डिडक्टिव, डिडक्टिव जिसको आप डिडक्ट कर रहे हो, यानी आपके पास बहुत सारे में से आप अगर एक को कंसिडर कर रहे हो तो वो कैसे आता है, आपको डिडक्ट करने के बाद ही आता है. इट मीन्स दैट इट्स अ डिडक्टिव अप्रोच. वेरएज इंडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, इट्स लाइक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू general example is it's considered. Okay, then coming next to the next topic here, types of research. Okay, so in research types, basically let's understand what are the research types. जैसे first है exploratory, जहाँ पे हम consider करते हैं practical element. We talk about practical element. We talk about aims of new problem. What are basically आप new problem को क्या aim है new problem का. It is usable and dependable fact. Next is descriptive research. Descriptive research, it describes the behavior of the situation. Okay, it talks about the situation as well as the population, sample population. At the same time, ये focus करते हैं expanding the knowledge on the current issue पे knowledge expand करते हैं. फिर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो जिसको हम कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं, which explains the explain ना, तो cause and effect, it is caused by the changes introduced in existing process. जो explain करता है, explanatory, जो explain करके it tries to understand. explore करके यानी आप कुछ ढूंढ के उसे रिसर्च को कंडक्ट करते हो. डिस्क्रिप्टिव, यो डिस्क्राइब करके रिसर्च को फाइंड आउट करता है. सो अगर आप इजीली ये वर्ड्स याद रखोगे तो इट विल बी easier फॉर यू टू अंडरस्टैंड द concepts and the questions, because basically in net examinations if your concepts are clear, अगर आपके concepts अच्छे से clear है, it will become easier for you to answer the question rather than just blindly and knowing the topic. Okay, next is experimental. Now experimental यानी obviously it adheres, यानी ये बेसिकली किस पे फोकस डालते हैं, आप कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट करके मैनिपुलेट करके ऑफ वेरिएबल्स आप कुछ रिसर्च आउट कर लेते हो. ऑब्जर्वेशनल, इट्स बेसिकली अबाउट इट्स नॉन एक्सपेरिमेंटल. ओके, एज नो वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल और नो कैजुअल कंक्लूजन्स. एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स यानी जो it describes how independent variable affects the dependent variable. It is also called as the quasi experimental, यानी यहाँ पे randomly कुछ चीजें नहीं होती है, it is properly systematically conducted. नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंटल रिसर्च. डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस करते हैं जो चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एनी फॉर्म, या तो लॉन्गिट्यूड में है या क्रॉस सेक्शन में है, यानी काफी काफी सारे मंथ्स, years, it goes on and it is in the form of cross section. Historical research basically it talks about what, it talks about the past events.
ओके। फिर बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की। एनालिटिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो विच टॉक्स अबाउट इन डेप्थ एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इंफॉर्मेशन और ऑफ अ फैक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस, अ स्टडी, अ इन डेप्थ रिसर्च. Next is social research, which talks about or takes into consideration the socio-economic groups, the study of different aspects of human behavior. नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। इसका एक फेमस टॉपिक आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 2-3 बार देखा गया है, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्शन रिसर्च। एक्शन में इट गिव्स एन इमीडिएट solution to the problem, or it solves the immediate problem basically, और steps involved होते हैं, that is to plan, to act, to observe and to reflect. नेक्स्ट कम्स इज ग्राउंडेड थ्योरी। अभी ग्राउंडेड थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, देयर इज नो बेस एट ऑल, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, एंड हेल्थ इट इज कॉल्ड एज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंड यानी ग्राउंड वर्क से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। Then next is there are two types of variables which people should be aware. One is called as independent, another is called as dependent. See the name itself, dependent. यानी ये जो variable है उसको इस independent variable पे depend होना पड़ता है। जैसे like for example, when you're talking about students and teachers, okay, forget about whether it is adult learner, but obviously whether it's a child, a student has to depend on teacher. So dependent यानी जब तक student अपने आप से चीजें सीख नहीं लेता है, understand नहीं कर लेता है, there may be an exceptional cases, okay, but a student is considered as a dependent factor or a dependent variable which is dependent on what, on the independent variable. यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, यहाँ पे गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, and definitely it affects the change in the dependent factor. जो जितना आप independent factors को skilled out करोगे, आपके dependent factor में वही results या changes आपको reflect होते दिखाई देंगे. नेक्स्ट इज योर डेटा कलेक्शन के टूल्स। कि डेटा कलेक्शन आपको करना है तो कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। जैसे फील्ड स्टडी है जहाँ पे डेटा कलेक्शन होता है, इट कलेक्ट्स ऑथेंटिकेट डेटा फॉर द स्पेशल पर्पस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू, सर्वेज और ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट होती है केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ओके, विच इज बेसिकली यूज्ड इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पे होती है। आपने बहुत सारी केस स्टडीज देखे होंगे, ओके, केस स्टडीज ऑफ जेट एयरवेज, केस स्टडीज ऑफ एयर इंडिया, ये तो मैंने एविएशन इंडस्ट्री के दिए हैं, केस स्टडीज ऑफ नाइकी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के। सो काफी सारी चीजें आपको इस केस स्टडी के मेथड से पता चलती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च ऑल्सो. Next is sociometry. It talks about qualitative method. It seeks preferences of each member or for the certain purpose or an activity. नेक्स्ट होती है कंट्रोल स्टडीज या तो केस रेफरेंस स्टडीज, जिसको हम बोलते हैं इट्स यूजफुल इन रेयर डिसीजेस जो बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल पीरियड पे डिपेंड होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम विच हैव बीन पास्ड. ओके, कोहर्ट स्टडीज जिसे हम पीपल ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, basically used in medical and social sciences, and it is basically the main intention of this is what to estimate the risks. देन आते हैं सर्वे मेथड जो क्वांटिटेटिव है, फेस टू फेस, टेलीफोन या मोबाइल फोन से, आई मीन टू से यू कैन कंडक्ट इट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स नाउअडेज आल्सो. ये लॉन्गिट्यूडनल है, जिसके मैंने आपको बोला था बहुत सालों से ये रिसर्च चलती है, क्रॉस सेक्शनल है, एज ग्रुप में भी है, फैक्टर है या नेचर वाइज है. कोरिलेशन, there is a relation or not, okay, whether there is a negative relation or a positive relation depends upon which type of a relation a child sorry, which type of relation uh, are there between the variables, okay, between the variables from one variable to another variable. Then let's talk about observation, that is directly and indirectly which is done. Okay, basically it is it
it affects descriptively, that is directly; inferential with the help of body language; evaluative with the help of judgment from the document. So basically, on this basis, you can talk about what you can talk about the observation method, which comes as one of the method of data collection. Next step की interview method, which can happen in structured or in unstructured way. That is, in the form of group interview, जो focused interview है, clinical interview है. स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड यानी यहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो क्वेश्चंस को, स्ट्रक्चर्ड होता है. अनस्ट्रक्चर्ड यानी आप रैंडमली क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हो. ग्रुप इंटरव्यू, दैट इज इन द ग्रुप more than two or more candidates or people. Focused interview जो बहुत ही organized होता है, systematic होता है. Clinical interview, it is, basically it's a clinical study in the form of clinical study. नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस. दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वाज टेलिंग यू कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सॉरी, ये आ सकता है आपको, टू अरेंज देम इन द सीक्वेंस. बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो जस्ट रीड इट वेरी प्रॉपरली. So first it starts with formulation of a problem, then doing a critical literature review, hypothesis formulation, preparing. The next is the research design, then determining the design. Okay, collection of data, data analysis, hypothesis testing, generalization, and the report preparation. So let's understand how it happens. Formulation of a research problem, जहाँ पे इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. इंटरेस्ट एरिया के साथ गैप्स फाइंड आउट करना, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना, एज वेल एज रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, एंड देन आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन who are going to be a part of your research problem, that is in the form of research. नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, जो आप कंडक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ various resources. That is primary, first hand है, secondary which you get available readily, and the tertiary which is a combination of primary and secondary. Going ahead with formulation of a hypothesis. Hypothesis कैसे होने चाहिए? Clear, simple, complete, communicable and acceptable. It can be simple, जो predict करते हैं relationship को, complex, जो examine करते हैं. तो बेसिकली हाइपोथेसिस जैसे आपको बताया गया था, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द आंसर्स टू द रिसर्च प्रॉब्लम, दैट इज आइडेंटिफाइंग द गैप्स, doing the further investigation. The reason is to define the relationship between the variable and a dependent factor, that is one which is measurable, another which is controllable. नेक्स्ट इज रिसर्च डिजाइन. इट्स नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट. ओवरऑल फ्रेमवर्क है, वो स्कोप डिस्क्राइब करते हैं, डेटा टाइप के बारे में, विच टाइप ऑफ डेटा, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द टेक्निक विच इज यूज, एज वेल एज ये एथिकल इश्यूज को भी इन्वॉल्व करके it tries to eliminate certain important things which are not important as per the research. Sample design, that is a population study जिसको प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं, सैम्पलिंग को डिटरमाइन करते हैं, एज वेल एज इम्प्लीमेंट करते हैं कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करना चाहिए. The next is data collection. It helps to represent the testable facts with the help of understanding the tools, methods and instruments. You can do it in a very systematic way with the help of various tools available in research. डेटा एनालिसिस, जहाँ पे आप डेटा को स्टडी करते हो द एंटायर पॉपुलेशन, डिस्क्राइबिंग द सैम्पल टेस्ट को, रिलायबिलिटी एंड इनवैलिड, वेदर दे आर वैलिड और इनवैलिड. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेदर आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, आपको डिटरमाइन करना है विद सिग्निफिकेंस वैल्यू, और उसके बेसिस पे ही आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो. फिर आता है आपका फाइनल, ऑलमोस्ट क्लोज टू द फाइनल स्टेप, दैट इज इंटरप्रिटेशन अबाउट द डेटा एनालिसिस. आप उसको कैसे पुट अप कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो. एंड देन आता है फाइनली राइटिंग अ रिपोर्ट, दैट इज प्रेजेंटिंग योर रिसर्च पेपर इन अ वर्कशॉप, अ सेमिनार और sorry conference, publishing the articles, and then getting this is taking the help of the certification. नेक्स्ट है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वेरिएबल, सैम्पलिंग एंड स्केल्स.
लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल जो हमने अभी देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. जैसे प्राइमरी इट्स अ फर्स्ट हैंड वेरिएबल. Okay, secondary is sources is second, that is it is not directly freshly taken. It's and tertiary sources which makes use of both of them, but normally it is not I mean such things are not completely authored. देन नेक्स्ट इज, जैसे हमने इंडिपेंडेंट और वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, द वन विच कैन मैनिपुलेट, इन्फ्लुएंस, और द वन विच कैन सी द रिजल्ट एज वेल एज सी द चेंज. देर आर सर्टन वेरिएबल्स जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स, थिंग्स यू कीप सेम एंड यू डू नॉट चेंज इट, सच टाइप आर कॉल्ड एज कंट्रोल्ड. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस लीड्स टू हेल्थ डिटोरेशन. तो हेल्थ डिपेंड किस पे करता है? स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो हेल्थ खराब होगा, अगर स्ट्रेस लेवल रिड्यूस है तो हेल्थ मेंटेन रहेगा. So like that, so many examples I've given you into in order to make you understand that the relation between independent and dependent factor. Then type of hypothesis, starting with simple hypothesis, जहाँ पे the normally independent variable and the cause and effect variable are described. This is smoking leads to cancer. So the smoking is, the higher ratio of unemployment leads to crime. So the out of this, you need to determine the uh, I mean to say the dependent and independent factor, and accordingly start your hypothesis and start collecting the data. कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, टेंशन और चेस्ट इन्फेक्शन. सो इन ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? सो इनको प्रूव करने के लिए डेटा एंड एवरीथिंग हैज टू बी सॉर्टेड आउट. सो इट इज़ लाइक इट इज़ कॉम्प्लेक्स. Empirical, which depends upon real life, hypothesis. Okay, uh, at the same time, null hypothesis, which is denoted by HO, that is stating no significant difference between the population, and the opposite and the alternate hypothesis, which describes the uh, differences in the population. Then coming to sampling techniques, this is probability and non-probability. Probability में जैसे आपको probable है कि आपके sequence या chance आने वाली है, but non-probability में there is no chance like that. There is, I mean to say, there is no hope like that. So let's understand, a little bit in detail about probability and non-probability sampling. जैसे सिंपल रैंडम है, जहाँ पे आप सिंपली इन अ रैंडम वे आप उसको सिलेक्ट करते हो. सिस्टमैटिक सैंपल है जो लाइक सी सिस्टमैटिक इन विद अ वेरी प्रॉपर सिस्टम. इधर यू ड्रॉ द सीक्वेंस और सिस्टम, और उसके बेसिस पे आप रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर सकते हो, जैसे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स. In that way you can do a systematic sampling. Stratified sample, that is stratified uh, in a different strata. According to different strata you can take the sampling. Clusters, that is in the group. Okay, this is your probability sampling. Coming to non-probability, snowball, a sample that is called as a networking. With the help of networking you can go on collecting the samples. Quota, that is has a fixed way of getting the samples selected. Judgmental sampling, basis on your judgments, you go, and convenience, it is whichever you feel is nearer, better, faster, according to the convenience you go. Then coming to the scales, that is starting with nominal, ordinal, interval, ratio. So nominal, starting with nominal, which cannot be quantified first of all, and it is categorized, labelized, classified depending upon the types. Ordinal, which provides a rank, order of the objects first to last. Okay, or in the form of rankings, best to worst, let's in the form of like scale. Interval के बारे में, it's like it's about equal intervals or distance or uh, between the adjacent numbers. At the same time, ratios, it's like absolute 0 point, which permits forming ratio statements in the form of rank ordering, equal intervals, and additional characteristics. Coming to summary, that is the next topic. It's where we have research report and styles of referencing and abbreviation in ethics. So starting with research report, that is coming with the title, cover page, certification of originality, acknowledgement, abstract,
Introduction, limitations of the study, literature review, research design, analysis, conclusion, bibliography, and appendice. That is, in the sense we have done till here, we have to go with this two properly. Let's still once take a quick glance. Okay. Sorry, in the form of referencing, the styles of referencing, we are going to study in that. You can pick up a Harvard style or a preferable, MLA style, APA style, and accordingly reference your bibliography. Appendice is nothing but the questionnaires, the Google forms, whatever you have used to collect the data. I mean to say data from this population, you can use as your appendices. Okay. Then starting with research presentation, कहाँ आप कर सकते हैं research presentation, that is conference and symposium. तो अगर हम दोनों की बात करते हैं तो it's like almost similarity, but conference it happens at a very bigger level, whereas um, symposium happens at a small level. A seminar, workshop, and colloquium, that is, based on your way of approaching to the people. You can convey your thoughts to, in the research presentation. So whether it's a conference or it's a seminar, you can do it. Next, कमिंग टू स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एमएलए स्टाइल जो ह्यूमैनिटीज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, एपीए स्टाइल इन द सोशल एजुकेशन, सॉरी, सोशल साइंसेस एंड एजुकेशनल स्टडीज, इंजीनियरिंग स्टडीज. When it comes to Chicago style, it's about history and humanities. When it comes to Chicago with author dates, it's about physical, natural, and social sciences. At the same time, when we talk about sorry, summary, that is abbreviation. Certain abbreviations are given for an understanding. ETL, there's many other authors are used. IBID, it's like, it's the same place. ID, it's, the same, the meaning is same. Law society, it's about, it's placed in a place cited. It refers to OPCIT, that is, it addresses, the work is addressed already. The work addressed is already cited. It means that it is already in process. Okay. Next part is application of ITC in research and research ethics. Application may, let's start with InflibNet. It's nothing but information and library network, full form. Okay, that is autonomous inter universities. It's in inter university IUC under UGC headquarters Gujarat, that is Ahmedabad mein hai, established in 1996 under the Yashpal committee. It worked as in detail with which was initiated by UGC. Coming to consortium of InflibNet, that is eShod Sindhu, electronic resources in the form of higher education, the initiative taken by MHRD and InflibNet. Okay, so Sindhu, that is introduced by MHRD in the form of it provides an access to plagiarism detection software. Uh, in India, that is 1991 onwards. NLIST is nothing but the National Mission on Education through Information and Communication Technology. It's about information in the on the infrastructure about e-journals, e-books, and the various resources. Initiative of InflibNet, that is Shodh Ganga, a reservoir for a dissertation or thesis. Shodh Gangotri, it's a repository of Indian research in progress, that is in progress details. Vidyamitra, it's an online portal for e-counter projects which is developed by National Commission on Education. Vidwan is on profiles of various scientists and faculty members which are working in the leading institutes of the country. In CAT, that is free online catalog of books, thesis, and university papers. Okay. Coming to government sponsoring schemes, I have just listed all the government sponsoring schemes over here. Though I have not seen any question on this except one or two, but I'm just leaving this so that you can, pause the video, take a screenshot और इसको approach revise करते रहो. Not only the Prime Minister Fellowship, but also the government, the central government scholarship for the people whose incomes are less. So just ensure, I'm to say, um
scholarship, not income, sorry. It's about research and development for the innovations. Okay, so these are the list. I have given you the full forms also, so that it will be easier for you to understand and study. Okay, in the coming subsequent slides you can pause it and you can take the information or a screenshot. Coming to ethics, yes, the one which protects the human practices from harm. It's a process, it serves the individuals, the groups. It is basically to specify the research activities in a very sound manner, authenticated manner. So the fundamental principles are respect for person, beneficence, and justice. Very important when you're doing a ethics, when you're doing a research ethics. It will definitely raise the issues of relevant to the research process with reference to biasness, fabrication, falsification, partial publication. So this all will be reported. Coming to the measures which are, to ensure the ethical research in the form of maintenance of accounts, the things under the college premises, especially in this pandemic situations, certain ethics has to be followed, not harming anyone, respecting the college integrity, or, voluntary participation. This all are the part of what ethical research. And this where we end with our research aptitude, that is unit 2, a complete set of revision. Coming lectures में I will keep on ensuring that मैं आपको important topics I just keep on sharing so that आपको उसके लिए revision भी होगा. नेक्स्ट यूनिट हम कौन से करने वाले हैं, दैट इज आई बी पोस्टिंग द वीडियो टुमारो कि हम नेक्स्ट यूनिट कौन सा करने वाले हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. And accordingly you can start your preparation for both the units which you have done. uh, in the description box आपको सारे links मिलेंगे lectures के, आप उन lectures को देख लो as well as ये revision lecture कर लो. So it will be helpful in getting the things done faster, और आपकी एक अच्छी practice भी होती रहेगी so that you can definitely have a positive intention of cracking your examination at this particular coming upcoming examination, which will be scheduled in any way, any time, and it will be helpful for you to boost up with your preparation. So thank you everyone. See you in the next class with the next video on a new different topic. I'll let you know with the help of video which topic we are going to start from the coming days. Thank you everyone.